Basically, we are going to create our own chatbot today. Chatbot means like we have ChatGPT. Like this is a chatbot, ChatGPT. इसी टाइप का हम अपना कैसे chatbot डिजाइन कर सकते हैं with the help of our AI tool. Okay, that AI tool was this only, co.com. We will simply hit enter. Okay, this interface will come because I have taken already a session on these how to explore different types of chatbot. So here you can explore, and also when you will be coming down, there are many official bots and apps which are designed by people only, people like us only. Okay, some are official, but some are made by different people. You can see they have given name like University GPT, Mr. Teacher GPT. So I will help you learn anything you need. For example, if we click on this, okay, Mr. Teacher GPT. This is the chatbot by who has made by Ben Sonrata. Okay, somebody from different country. So इसके कितने monthly users हैं? 5,000 monthly users are there and 6.1 followers. And इसका rate क्या है? What is the rate? This is the rate. Okay, standard first message. The message cost is variable, so no longer messages are more expensive than shorter messages. So like this, it has given. Okay, subscribe for more points. This option is also there. Then, so like this, we are going to make a chatbot. So basically, this chatbot is what about I will help you learn anything you need help with. I am your AI teacher. So new courses to create a course, just ask. Like, hello, I am your virtual teacher. Need help with anything? If you want to start a new course, then holler. Okay. If you want to learn HTML, if you want to learn Python, if you want to learn math, so these are the courses she is offering. So simply you need to type here and then automatically everything will be there in front of you. Now, coming to how to create your chatbot. So simply you will click here, create, with the plus sign, create, you will click here. So these are the few standard chatbots you can make like prompt bot. So whatever I have just shown you, that is teacher bot, that is prompt bot. Then image generation bot you can make. You can make video generation bot also. You can make role play bot. Role play bot means like gaming bot. Okay. Then server bot and canvas app. So I will be teaching you today this prompt bot. So simply you will click here. Prompt bot. Okay. So type is prompt bot. If you want to change from here, you can change from here also. Okay. These are the six bots you can make. But we will be learning prompt bot today. Prompt bot कैसे बताना है? उसका नेम, अब नेम यू कैन डिजाइन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज you want to make a bot on your niche, according to your niche. Suppose you are happy or if you are good in designing, so I will be making a bot which will help students or people to have designing material. Or we can choose another, like if you are interested in science and fiction movies or books, science and fiction books, then you can make that bot also. So accordingly you can give the name so that from the name only people will attract. So sci-fi bot we are going to make sci-fi book, what you can say, sci-fi book maker. Okay, sci-fi book maker, and you need to give one number also, like so that it is easily distinguishable from others. Suppose if any person around the world gave this name, so it will be matching or it will be giving a clash. So simply you can give a number. So sci-fi book maker और जनरेटर, जनरेट करनी है बुक तो जनरेटर भी नाम दे सकते हैं. जनरेटर. ओके, sci-fi book generator 27. Now, what you will write in the description, describe the functionality to set people's expectations. So I will create a sci-fi book. Okay, on topic given by you. मैं एक sci-fi book बनाऊंगा on the topic given by you, and you can describe in 4,000 words. Maximum limit is 4,000 words. Then behavior. Now when this bot, here you can edit your picture also, you can put your picture.
So I will be taking one picture from my desktop. There are many, so I am taking this. You can put over here your picture also. So from picture also, your board will be easily distinguishable for you. Clear? Now here, what it is asking, description is done, name is done, type, we have selected prompt dot behavior. Now when you will come to this point, here there are many options. So you need to select one. Means whenever any person will come to your bot and enter something, so through which AI chatbot or AI tool the material will be generated, because it will need a AI tool to generate a book. Like if you are generating a book from ChatGPT, then ChatGPT is required. If you are generating from Google Gemini, then Google Gemini extension is required. So you need to connect basically. Okay, so connection is required. So accordingly, according to your choice, you can connect. Suggested tools are these, but we can scroll down and we can have Gemini. We can have Gemini 1.5 Pro. So you can go for many things like ChatGPT 4.1. So I am interested in this. So ChatGPT 4.0, I am taking this. Okay. So I have selected this. Now, next is prompt. Suppose if any person is giving a prompt that generates sci-fi book on time traveler, or what will be the life in 2050 on Mars. Okay. So that person will give the prompt and put the enter button. Now, how ChatGPT know that what kind of book it has to create? उसको जो prompt आया है, उस बुक में लिखना क्या है, किस टाइप की चीजें होनी चाहिए, हाउ द डिस्क्रिप्शन विल बी, सो दैट यू नीड टू गिव इन द prompt. Like example, they have given you are a travel assistant. Provide travel recommendation for destination, hotels, and activities in a friendly and informative manner. So like this, you can give the prompt to ChatGPT to understand if somebody is coming. But your topic is sci-fi, so we will go for examples which are given by them. po.com view best practices for prompts. यहाँ पर आपको click करना है and you will be redirected to this page. When you will be redirected to this page, these kind of prompts will come. Examples of prompt: address the bot in second person instead of third person, be as clear as possible to reduce the room for misinterpretation, you can use square brackets like this. अब इतना पढ़ेंगे तो और उसके बाद फिर अपना प्रॉम्प्ट डिसाइड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एआई का है, रिवोल्यूशन एज चल रहा है एआई का, तो हमें तो क्विक चाहिए सब कुछ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी फ्रॉम हियर फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो जनरल प्रॉम्प्ट से हम पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ से इधर से हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, कॉपी इट एंड वी विल कॉपी इट टू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तक। उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तक आप कर लो, कंट्रोल सी। नाउ कम टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर आ जाओ और ये प्रॉम्प्ट लिखना है आपको। ओके, क्या लिखना है आपको? आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बॉट ऑन po.com। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक बॉट बना रहे हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक बॉट बना रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। हमको इतना प्रॉम्प्ट पहले एज इट इज लिखना है, दिस टू लाइंस, कंट्रोल सी, ये कर दिया, कंट्रोल वी। वापस गए हम यहाँ पर, वो जो प्रॉम्प्ट थी इनको कॉपी किया, और ये जो प्रॉम्प्ट्स कॉपी करी हैं इनको एज इट इज क्या करना है, नीचे फिट कर देना है। जो हमने po.com के जो एग्जाम्पल से उसको कॉपी किया, उसको मैंने कहाँ रख दिया, उसको मैंने कहाँ रख दिया, नीचे यहाँ पे, और ऊपर दो लाइंस लिख दी, टू लाइंस आई हैव रिटन। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बॉट ऑन po.com फॉर राइटिंग अ साइंस फिक्शन बुक, रिफर टू द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो एंड जनरेट प्रॉम्प्ट फॉर मी। तो ये जो नीचे प्रॉम्प्ट्स है जो मैंने po.com के एग्जाम्पल पेज से ली हैं, वो यहाँ पे कॉपी पेस्टेड है। उसको मैंने बोला है चैट जीपीटी को कि वहां से आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लो और मुझे इस तरह का जनरेट करके दो, मुझे कौन से टॉपिक के लिए, फॉर साइंस फिक्शन बुक के लिए। सिंपली हिट द एंटर बटन, it will give you the prompts. Okay, so prompt for PoBot creation. So you are Galcato writer, a futuristic storytelling assistant for writing epic science fiction books. Your job is to help user. तो यहां से लेके पूरा आखिर तक हम कॉपी कर लेंगे। ओके, कंट्रोल सी, दिस मच वी विल कॉपी, इतना हम कॉपी कर लेंगे। अब इसको हमें चाहिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, तो अभी हम इफ यू आर नॉट हैप्पी, if you're not happy with this much of prompt, then give
Again, give me detailed prompt for same. मुझे लग रहा था कि ये prompt sufficient नहीं है, तो डिटेल्ड में मांगा मैंने उसे, डिटेल्ड मांग लिया उसको अब। सो अब यहाँ से अब देखते हैं ये पूरा जनरेट करेगा अब चैट जीपीटी अच्छे से। ओके, so till the time you are not satisfied, ask the answers again and again. Now it is giving everything, functional capabilities, writing style कैसी होनी चाहिए, examples होने चाहिए उसमें, देन प्लॉट आइडिया होना चाहिए, देन रूल्स टू फॉलो होने चाहिए उस बुक में। So everything should be there, तो उसको पूरा जनरेट हो जाएगा अभी, देन वी विल कॉपी इट। नाउ आई थिंक इट हैज जनरेटेड। नाउ वी विल कॉपी इट फ्रॉम हेयर, दिस, यहाँ तक हम इसको यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C, कम टू दिस po.com, और यहाँ पर सारी प्रॉम्प्ट्स के नीचे प्रॉम्प्ट वाला जो बॉक्स है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। आई होप टिल हियर योर स्टेप्स आर क्लियर। व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेलेक्ट द प्रॉम्प्ट बॉट, एडिट पिक्चर, नेम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि हम क्या करने वाले हैं। आई विल क्रिएट अ साईफाई बुक फॉर यू कर दो, फॉर यू ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक गिवन बाय यू, ऑन द टॉपिक गिवन। ओके, देन साईफाई के बीच में आप हाइफन डाल दो। देन यू हैव सिलेक्टेड द बेस बॉट, कि वो बॉट कहाँ से सारी चीजें जनरेट करेगा। देन प्रॉम्प्ट ऑल्सो यू हैव गिवन, यू हैव जनरेटेड द प्रॉम्प्ट फ्रॉम चैट जीपीटी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। क्लियर? And now, simply, now when you will scroll down, then this page will come, knowledge base. Provide custom knowledge that your bot will access to inform its responses. Your bot will retrieve relevant sections from the knowledge base based on the user message. The data in the knowledge base may be made viewable by other users through bot responses or citations. So here you need to click add knowledge resource. Now, if you have any sci-fi book or PDF or any text, then you can add here. It is not compulsory, it is an optional. Then what will happen if you will simply select these kind of, it will redirect to your computer. Then if you have any PDF related to any of the books you are having, clear? So you can attach that. If you don't have, then it's fine. Suppose if you are writing a book on share market and you have some data regarding share market, then you can attach here. Or if you have any text, if you want to take text from any website, then also you can simply copy paste the text. Okay, content here and title you can give. But right now it is not at all necessary. It's your choice. Because I want what I want. I will want that my bot will function with the help of ChatGPT, and it will function on this prompt, whatever the prompt I have given. एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट फॉर प्रीव्यूज, तो ये इसको भी आप ऑन कर देंगे, इसके नीचे जो बटन है इसको ऑन करना है, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट फॉर प्रीव्यूज। इफ अनेबल्ड, एडिशनल इंस्ट्रक्शन विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू द बॉट टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस इन जनरेटिंग इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। क्लियर? एंड दिस नॉलेज बेस इज ऑप्शनल, अगर आपके पास कोई डाटा पड़ा है तो आप उसमें अटैच कर सकते हो। सपोज अगर आप कोई डिजाइनिंग बुक करना चाह रहे हो, आपके पास डिजाइन के बहुत सारा पीडीएफ पड़ा है, तो उसको डाटा दे दो कि भाई इस तरह का आपको सब कुछ डिजाइन करना है। देन ग्रीटिंग मैसेज, सो द बॉट विल सेंड दिस मैसेज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी कन्वर्जेशन, तो यहाँ पे लिखो कुछ भी ग्रीटिंग मैसेज, हेलो, वेलकम टू माय साई फाई बॉट, आई विल क्रिएट अमेजिंग साई फाई बुक्स फॉर यू। सिंपल, ये है, जब भी बॉट पर आएगा कोई तो ग्रीटिंग मैसेज जैसे सबसे पहले ये दिखाई देगा। ओके, एंड देन सिंपली nothing to do go in advance, nothing to do go in advance, custom temperature, no, कुछ नहीं करना है, no setting is required now, simply click on publish, your bot is ready। this is this is how your bot is ready। okay, your, and from here it is showing share app, so simply copy link copy होगी share से, and now I am sending you to you। okay,
अंजलि मैम को हमने बोल दिया है। अंजलि मैम, ये मैंने आपको कंट्रोल भी कर दिया है और ये आपके पास आ गया है। यू कैन जस्ट क्लिक एंड ओपन इट नाउ। सिंपली आप ओपन करो and just see what kind of interface it is having. So yeah, here you can see I will create a sci-fi book for you on the topic given. ये भी आ गया है मेरे बॉट के बारे में। एंड यहाँ पर इसका वेलकम मैसेज है, हेलो वेलकम टू माई sci-fi bot, I will create amazing sci-fi books for you. Okay. And here suppose if I will write create a book on travel to Mars in 2050. If my tokens are there, then definitely it will generate. So I have given, now it has. So what is asking? It is asking that for more point than your pre-message per message budget. So current request set per message budget for this chat. तो current image is this. तो आप इसमें आपका बजट भी सेट कर सकते हैं, रिमेनिंग आर 300। सो 250 पे अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंटिन्यू विद न्यू बजट। सो या यू कैन सी नाउ इट हैज स्टार्टेड एवरीथिंग। ये आपके बॉट ने सब कुछ जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यू कैन सी बुक कंसेप्ट रेड डॉन जर्नी टू मार्स। इसने टॉपिक कितना अच्छा दिया बुक का। बुक का नेम है, दिस इज द बुक नेम बेसिकली। व्हाट इज द जॉनर? इट्स हार्ड साइंस फिक्शन एडवेंचर, टोन टेंस होपफुल एंड ग्राउंडेड इन रियलिस्टिक साइंस विद दिस। नाउ सेटिंग ईयर दिस मार्च इन 2050, अर्थ इन दिस, मेन कैरेक्टर्स के नेम दे दिए, डॉक्टर इलारा किंतारो एंड कैप्टन मलिक ओ कर्नल पायलट। और लाइक दिस इट हैज जनरेटेड द बुक and here you can see. Okay, so it has generated the thing according to my prompts given. उन्होंने पूरा उसको प्रॉम्प्ट के उसमें फॉर्म में दे दिया। नाउ वुड यू लाइक मी टू एक्सपेंड ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टोरी? आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी को एक्सपेंड करना है, आप कर सकते हैं। एक्ट वन, इसमें चैप्टर का नाम इन्होंने एक्ट वन रखा है। तो लाइक दिस वॉट एवर द प्रॉम्प्ट वी हैव गिवन अकॉर्डिंगली इट हैज डिजाइन। तो आपको कोई भी एक्ट को डिस्क्राइब करवाना है तो यू कैन गो फॉर दैट। सो अगेन पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो स्पीक at the 11 labs we इसमें attach है already. So like this you can go and you can explore many things. You can create your own bot. This is how you can make, and you can explore other bots also for your requirement. And when we talk about, if you are seriously interested in this tool, AI tool, because in free tokens only few means limitations are there. But if we talk about the paid plans, okay, if we talk about the paid plans, then simply you can come and here see the pricing. Subscribe, and then here it will be creators, subscribe. Let's click on subscribe. Here per year 4,900, approximately 5,000 rupees per year, and per month is 400 rupees, and you will get 10,000 points per day. In one day you will get 10,000 points. So I think this is more than sufficient, because इतना तो आप यूसेज कर ही नहीं पाओगे 10,000 पॉइंट्स का एक दिन में। So if you are seriously interested about this tool, at least go for first 1 month, and then accordingly you can just try for 1 month and just see how much beneficial this tool is for you and in which way you want to use. And of course from here you can do the monetization also when your bot will be live, because I have already published it. Published means your bot is live. So any people who are knowing this, and if you can send this link to your friends or even your business circle or wherever, so when they will use, they then definitely they need to buy points, and automatically the money will come to you. Okay. So like this, you can go for monetization also. And here, if you will go for this plan, then you will get 1 million points per month. And you will go for this, then 2.5 million points. So like this, they have given, but I think you should go for this plan only. This is very cheap plan for 1 year also and for 1 month also, because 10,000 points you are getting. 10,000 points are more than sufficient for one day. And if your project is not completed in one day, then you can wait for next 24 hours.
automatically the points will be again regenerated for you or will be there. Okay, so go for this, and you can go for build monthly also. Here you can see 499 per month, that is 10,000. So just go through this AI chat bot website, AI tool. It is very much interesting and easy to use, and you can do many things. You can do many things. And I suggest you that whenever you are going for to create your own chatbots, at least try or create these also: image generation, video generation, canvas app, server board, like this also. You also go, means you should also go for these. Do check out these bots also. Okay, so prompt what I have described, accordingly you can go for this image generation bot like this. Okay, when you will go for image generation, this is the best one to integrate. Rest there is nothing to change. Flux is the best tool, AI tool to generate the images. Flux. Okay, and then same process you need to follow and then publish it simply. So from here you can do the monetization. So it's your choice how you can do the monetization simply from this tool, very cheap tool. And you can first create your bot with free tokens and then explore that which bot you are thinking that it is easy to sell and people will use many users can be there. Accordingly, then you can monetize. So that's all from the session. If you have any doubt, please ask. If you have any doubt, please ask. No doubt. I'll try this first, huh? I'll try. Please do try, and I hope the session is fruitful. And in the next session, maybe we will be going for something to create, like animation or some video part. We will be going for that session. Some other features have come for Canva. So I will be explaining that also. Some other things are there. Magic prompt they have added. Magic prompt. Writing a prompt, it will generate many things in very few seconds. So Canva is also Like if I select any of these tools like Flux, yeah, ChatGPT 4.0, do I have to take subscription for नहीं that नहीं and नहीं नहीं then I नहीं. need to attach, or it's all free? It's free, like free of cost then. Free of cost. If they will means message will come in on your Gmail if anything is required. Otherwise, it is free of cost. Because वो आपने उसमें इंटीग्रेट कर दिया, whatever the हाँ हाँ. charges will go, that will be go directly from po.com. वो उनको खुद चला जाएगा automatically. Okay. Because वो उनकी So अगर it's सर्विसेज ले included रहे, in that या cost. if they are हाँ. taking the services, automatically they are paying something to them. उन्होंने सारे बॉट्स एक ही जगह पे लाके रख दिए, तो इट मींस दे आर पेइंग समथिंग. ओके. हाँ. सो हमको वो बहुत नहीं सारे हैं पूछना. इसमें, हाँ, हाँ. इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे. बहुत सारे हैं. ओके, थैंक यू फॉर द सेशन. Yes. देन Sir. वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन सैटरडे. ओके. एंजॉय योर हॉलीडे टुमारो. Saturday we'll keep the same time. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी ऑन सेम टाइम. सेम टाइम. ठीक है.